नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। I am Dr. Alka Jain, working as a associate professor in the Department of Community Medicine, Faculty of Homeopathic Science in Jyoti Vidya Vidyapeeth Women's University. So here it is a third part of poliomyelitis disease. In this part, I will describe about mainly the management part and the prevention and control of poliomyelitis. In previous two parts, I already have told about the epidemiological determinants of the disease and its clinical spectrum and diagnosis. So this is the third and last part of the poliomyelitis disease. Before going to the prevention or vaccines part of the disease, how we will manage the case of the poliovirus or poliomyelitis disease, because there is no treatment. Polio cases requires general supportive care and skilled management, which includes mainly the isolation in the isolation ward, क्योंकि ये डिजीज इन्फेक्शियस होती है इसलिए इसको पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है। दोनों तरीके से होती है, एक्यूट स्टेज में ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी होती है और फीको ओरल रूट के थ्रू भी होती है, इसलिए आइसोलेशन वार्ड में रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा ये होता है कि कंकरेंट डिसइंफेक्शन, यानी कि पेशेंट के जितने भी जो डिस्चार्जेस है, उसकी वॉमिटिंग्स है, उसकी फीसेस है, उसके ड्रॉपलेट जो डिस्चार्जेस है, कफिंग है, स्नीजिंग है, स्पूटम, उन सबको एक साथ ही हाथों हाथ डिसइंफेक्ट किया जाता है 10% क्रिसॉल के साथ। Then absolute bed rest, which is very essential during the acute phase, uh, and there should not be any stress on the affected muscles. Expert nursing care with frequent change of posture every 2 to 3 hours, नहीं तो बेड सोर्स होने की चांसेस होते हैं पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस में। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट विद पैरासीटामोल टू रिलीव पेन एंड फीवर, and prophylactic oral antibiotics to prevent secondary infections. Massage and injections during the acute phase is absolutely contraindicated. Uh, this is for about 6 weeks, यानी कि 1.5 महीने तक कोई भी इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का मसाज नहीं करना चाहिए एक्यूट फेज के अंदर। वो पैरालिसिस को प्रोवोक करता है, उसकी और उससे ज्यादा और एक्सेजरेटेड पैरालिसिस हो सकता है। एंड द सपोर्टिव ट्रीटमेंट विद स्प्रिंट्स इज प्रोवाइडेड टू द लिम्स टू प्रिवेंट डिफॉर्मिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एंटागोनिस्टिक मसल्स। मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डन ओरली एंड नॉट बाय द इन्फ्यूजन, क्योंकि इंजेक्शन देना ही नहीं है, सिर्फ ओरली ही उसको ट्रीट करना है पेशेंट को। फिजियोथेरेपी इज रिकमेंडेड नॉट इन द अर्ली स्टेजेस बट ओनली आफ्टर द एक्यूट फेज हैज ओवरकम. This is after the 6 weeks, and because stress and strain in the acute phase worsens the disease, and also whenever the disease damage is reversible in the spinal cord, the paralyzed muscles recover within about 4 weeks. Now come to the prevention and control part. Mainly there are two types of vaccines available throughout the world, and this is IPV and OPV. IPV is inactivated polio vaccines, OPV is oral polio vaccine. IPV is made from selected WPV wild poliovirus strains, and mainly Mahoney SAC type 1, MEF1, SAC type 2, and SAC type 3, that are grown in the virocell cultures or in the human diploid cells. Harvested viral components are inactivated with formaldehyde. All versions of inactivated polio vaccines have higher antigenicity than the first generation vaccines, and they are sometimes referred to as IPVs of enhanced potency. IPV may contain trace amounts of formaldehyde, streptomycin, neomycin, or polymyxin P. Now, come to the oral polio vaccines, OPV. It's also called Sabin because of the name of the researchers who researched it. And this was described by the Sabin in 1957. It contains live attenuated virus type 1, 2, and 3 grown in primary monkey kidney or human diploid cell cultures. Ideally, each virus type should be given separately as monovalent vaccines.
But for administrative convenience rather than efficacy, it is given as trivalent vaccines. यानी कि एक ही वैक्सीन के अंदर तीनों स्ट्रेन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, क्योंकि इसके थ्री स्ट्रेन होते हैं, थ्री स्ट्रेन होते हैं, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव को इजी करने के लिए ये 3 वैक्सीन लगाने की बजाय एक ही वैक्सीन में तीनों स्ट्रेन लगाए जाते हैं, जिसको ट्राइवेलेंट वैक्सीन कहा जाता है. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल WHO and the National Immunization Program in India recommended a primary course of 3 doses of OPV at 1 month intervals, commencing at the first dose when infant is 6 weeks old, then 6 weeks, 10 weeks, and 14 weeks. On administration, the live vaccine strains infect intestinal epithelial cells. After replication, the virus is transported to the Peyer's patches, where a secondary multiplication with subsequent viremia occurs. The virus spreads to the other areas of the body, resulting in production of circulating antibodies, which prevent dissemination of the virus to the nervous system and prevent paralytic polio. Intestinal infection stimulates the production of immunoglobulin A secretory antibodies, which prevent subsequent infection of the alimentary tract with wild strains of the poliovirus, and thus it is effective in limiting virus transmission in the community. So the OPV induces both local and systemic immunity in comparison to the IPV, which induces only systemic immunity because it is given intramuscularly, and OPV is given orally. So it induces both type of immunity, the local and systemic. The advantage of OPV are because it given orally, it is easy to administer and doesn't require the use of highly trained personnel. Induces both humoral and intestinal immunity. Antibodies is quickly produced in large proportion of vaccines. Even a single dose elicits substantial immunity. The vaccines excretes the viruses and so infects others who are also immunized, thereby useful in controlling epidemics and relatively inexpensive. The complications which may be seen after OPV is usually OPV is remarkably free from complications, but being living viruses, the vaccines viruses, particularly type 3, do mutate in the courses of their multiplication in vaccinated children, and rare cases of vaccine associated paralytic polio have occurred in recipients of the vaccines and their contacts. तो मेनली शॉर्ट फॉर्म इसको कहा जाता है VAPP, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो. Now the epidemiological investigations. The occurrence of a single case of polio is now considered as an epidemic and should prompt an immediate epidemiological investigations, including an active search for other cases. क्योंकि अब जो पोलियो है वो 2014 में डिक्लेयर हो चुका है इंडिया के अंदर कि ये इरिडिकेट हो चुका है. अब यदि इसका एक सिंगल केस भी यदि फाइंड आउट होता है तो उसको समझा जाना चाहिए कि एज ए एपिडेमिक और तुरंत एक्शन लेना चाहिए, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए कि कहाँ से ये केस आया, कैसे आया, क्यों आया, कब आया, सारे तरह की जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती है वो हर तरीके से करनी चाहिए. एंड सैंपल्स ऑफ फीसेस फ्रॉम ऑल केसेस और सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पोलियो should be collected and forwarded to the laboratory for virus isolation. Then conduct pulse polio immunization days every year until poliomyelitis is eradicated. Sustain high levels of routine immunization coverage. Monitor OPV coverage at district level and below. Improve surveillance capable of detecting all cases of AFP, acute flaccid paralysis due to the polio and non-polio etiology. Ensure rapid case investigation, including the collection of stool samples for virus isolations, and arrange follow-up of all cases of AFP at 60 days to check for residual paralysis. And then conduct outbreak control for cases confirmed or suspected to the poliomyelitis to stop transmissions. So this is an image which shows there is a switch from trivalent OPV to bivalent OPV.
यानी कि जो मेनली एक स्ट्रेन की वजह से तो पैरालिसिस होता ही नहीं है, मेनली जो फर्स्ट जो होता है टाइप 1 उसी की वजह से पैरालिसिस होता है, और टाइप 2 की वजह से बहुत कम चांसेस होते हैं पैरालिसिस के। इसलिए जो टाइप 3 है वो उसको हटा दिया गया है वैक्सीन के अंदर से, अब सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं, इसीलिए इसको बाइवेलेंट ओपीवी कहा जाता है। ये मेनली कैंपेन है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है बहुत टाइम से। 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार, या 2 बूंद जिंदगी की, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन के तहत। सो दिस इज ऑल अबाउट द control and prevention of poliomyelitis. Hope you understood well. If there is any problem or any query related to this topic, this is poliomyelitis, please mention in the comment box. I will try to resolve it as soon as possible. And this session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Thank you.